हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट वी आर गोइंग टू सी ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई वी आर लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन बिटवीन द डॉकर प्लेलिस्ट। देखिए गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हमें ये समझना होगा कि किस तरह से हमारा इवोल्यूशन वर्क किया, कैसे हम बेयर मेटल से वर्चुअलाइजेशन पे शिफ्ट हुए एंड कैसे वर्चुअलाइजेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनराइजेशन पे शिफ्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी द ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। सो व्हाट एग्जैक्टली द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम manages the hardware resource and provides services to applications while enable user interactions with the system. ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों वो हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है विथ यूज़र के इंटरेक्शन से। ठीक है, हमारे पास कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड इसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जबकि लिनक्स मल्टी यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट लिनक्स के साथ मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम में काम कर सकते हैं, जबकि विंडोज़ के अंदर सिंगल यूज़र ही एक टाइम में काम कर सकता है। राइट, सो विंडोज़ के अंदर एक ही यूज़र काम करता है, जबकि लिनक्स में मल्टी यूज़र कैन वर्क एट ए टाइम सेम time. This is called parallel workism, right? So to understand the operating system, each operating system, we have to understand the architecture of the operating system. So here is the operating system architecture. So हम सबसे टॉप पर होती है एप्लीकेशंस और यूजर्स, राइट? तो जो एप्लीकेशन के थ्रू, राइट, हम कर्नल को कमांड्स देते हैं। दैट कमांड विल बी talk with the system calls. There is a system called interface. From this interface the command will go to the kernel. Kernel is there is a kernel, right? Kernel is responsible for managing the CPU, memory, disk and network, right? तो ये जो एप्लीकेशन होती है इसको कहते हैं हम एप्लीकेशन और यूजर स्पेस, राइट, एंड इसको कहते हैं हम कर्नल स्पेस। अंडरस्टैंड इट इन मोर बेटर वे विथ ए कंसेप्चुअल मॉडल, राइट, ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी हैव द हार्डवेयर एंड ऑन द टॉप ऑफ द हार्डवेयर वी हैव द कर्नल. Kernel is what is the core part of the operating system, which is responsible for managing CPU, RAM, disk, network. Some people call it as brain of the operating system. The operating system is a interface between applications and computer hardware, right? So on top of the operating system we have the shell, right? Shell is an user interface that will provide different types of interface based on the operating system. Like we have the bash, sh and PowerShell. Bash is an is an command line interface, right, which is generally you will see in Linux operating system, and sh is also a interface of which is derived from the Unix operating system. And PowerShell, you know, this is the Windows, and we have GUI based interface also, like Windows Explorer, right, and GNOME, this is a Unix operating system, this is Unix related GUI based interface. And we have the KDE, right, this is also Linux GUI based interface. Now on the top of these interface we have the applications or user space, right? On that user space we can run different types of applications like WordPress, Notepad. So this is what exactly, guys, the operating system. If you have any doubt you can query, I will answer of your questions. Please
thumbs up and subscribe and share the videos. Thank you for watching.